the heads up display, I just wanted to show you that I have tried to copy another main instrument of an aircraft, that is a HUD. It's not an HUD. I have just tried to copy this with some cardboard, with the plastic glass, and just like that. So it gives you a feel that you are into an aircraft. So that's my HUD. It doesn't work. It's just a model. So it looks like this. You can see. Most of my friends say that you are making your car in more like an aircraft. You know why most of us guys are very much interested to convert their car into a sporty stuff. Just like this one. Yeah. But I'm very much into convert my vehicle. Very much inspired by the aircraft. So, and I want to show you a bit of this. So, okay, see you. And good afternoon. This is Video Vibes with Ahmed Qureshi. Today is going to be a bit different video. Uh, I'm going to show you, this is my car where I'm sitting in. I've installed some of a bit of gadgets, a few gadgets I'll show you, but main aspect I'm going to show it to you that is quite different from any normal car. I'm really very much inspired by the aviation. So you might know the HOTAS, HOTAS. So I've done so, not the exact one, but I've tried to install that one the way I have fabricated all by my own self. So I'm going to show it to you today. So that's the HOTAS. It's not the HOTAS, but it's actually a gear knob, 4-speed manual car. So I have tried to copy. You can say it's an inspiration for me to design this. So that's, I'm trying to tell you or to show you how I have made that. So you can see the fire. That is how you engage. That's how you select the. It's not exactly the weaponry inside. It's all like, as you can see, the toggle switches. That's actually I've installed for the fog. That's how I've installed for the LEDs, the front fog lights with the blue, and that's the switch that gives you the power. This one is like, once you arm it, see, once you have armed it, you can. It's more like a fire. It's not fire. It's just like a beeper. So with this, once you're driving in the night and you wanted to see it blinking, so it's there. For this switch, with this button, it's more like a countermeasure. Once it's not one, but I've installed LEDs with the laser on it. So once you need it, so you can press this one. Okay, this is the switch for the fog, and this is the one for the front LEDs. So yeah, it looks like this. So once I'm driving my car, so it feels like that mostly fighting Falcons, what we call as the Viper of F-16s, have the stick, or J-10C is having a stick on the right side. F-22 Raptor is having the stick on the right side too. Whereas since I'm having this gear knob, so I just try to mimic that, just like a HOTAS. It's not the original HOTAS, but it's just like I've installed all those, but I've just tried to, this is the way I just try to enjoy that. Let's see. It's the HOTAS side. So you can see the wire, it's having the set of wires, it's having the feed of current from the front hood, the battery, and also goes out here. I just try to cover all these wires. Okay, next on, so this is the button that lets you know you can turn on your radio. See, here you can have got some, see, that tells you the RPM, exact RPM it is. See, you can see now it's on idling. It should be 800 or something, less than a bit more, 800. Yeah, it's got to be 800, a bit more than that. So you can see this switch that gives you an ambience light. You can select them, the kind of color that you like. See, if you want it to go green, if you want
red, yellow, it's blue. It changes colors. So it depends on your mood, depends the way you like, depends how do you like it. It's a deal. So yeah, and if you press this one, like this one, this is actually the LEDs. Just try to install, and here it's all because of the foggy weather and all. I really like this band, New Retro Wave. That's why I've pasted that on that up there. So that's it. So you can see that tells you about the level of the car. Mostly that is installed in the aircrafts, but I've installed it there. And this is the SU-47. Very good. No, it's not the one, but I found it just like that. So it's a front swept wing. I like the aircraft, so somehow you'll find aircraft here and there. So yeah. So there we go. It was a nice chat with you. It's been a long time. Yeah, one more thing. See, you can see the compass that tells you about the temperature. So here we are. Okay, pleasure meeting with you, and keep smiling. Have a good day. Take care. Signing off. Video vibes with Ahmed Qureshi. वीडियो वाइब्स विद अहमद कुरैशी। इससे पहले मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है इंग्लिश में। जो लोग दोस्त मुझे इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो मैंने उनके लिए कोशिश की है। मेरी अंग्रेज़ी तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश की है कि उनके लिए थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी बोल के, क्योंकि कुछ दूसरे ममालिक में भी देखते हैं लोग, तो इस लिहाज से तो अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए और जो उर्दू समझने वाले भाई हैं उनके लिए, दोस्तों के लिए उर्दू में कोशिश की वीडियो। जल्दी से बताता हूँ वीडियो क्या है। कार में कुछ छोटी छोटी इंस्टॉलेशन चीज़ें लगाई थी। हर कोई लगाता है, हर आदमी, लड़का, हम तो लड़के नहीं लगे, आदमी मेरी तरह के लड़के लगाते हैं चीज़ें गाड़ी में कुछ उसको खूबसूरत बनाने के लिए। तो मेरा कुछ डिफरेंट होता है। मैं थोड़ा सा एयरक्राफ्ट से शौक़ रखता हूँ। आई नेवर फ्लू एनी, मैंने कभी प्लेन नहीं उड़ाया, लेकिन हवाबाजी थोड़ा सा पसंद है, शौक़। इसलिए मैंने एक चीज़ बनाई। अक्सर आपने देखा होगा जब आप प्लेन उड़ाते हैं, मतलब जब भी पायलट्स प्लेन उड़ाते हैं, तो एक हैंड्स ऑन थ्रॉटल्स एंड स्टिक, इसको HOTAS कहते हैं, HOTAS, वो ज़्यादातर हवाई जहाज़ में इंस्टॉल होती है। और मैंने उसको कॉपी किया अपनी गाड़ी पे, गियर नॉब पे मैंने बनाया। तो कैसे बनाया ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये है जी मेरी, इट्स अ 4 स्पीड मैनुअल गाड़ी है जी हमारी, सिंपल FX। और इस पे मैंने इसको कॉपी करते हुए हैंड्स ऑन थ्रॉटल स्टिक को इस तरह मैंने बना लिया। अब आप सोचोगे ये मैंने कैसे बनाया। ये बस मैंने यही कुछ चीज़ें, स्विचेस मंगवाए, या आपको पता है ये फायर ये लाइट इसकी होती है, और ये सब चीज़ें मिला के मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं इस तरीके से। ये स्विच मैं आपको दिखाया था जल्दी से। ये मैंने फॉग के लिए लगाया था, रियर क्योंकि ऑरेंज है। ये फ्रंट LEDs के लिए, और ये हॉर्न, लाइक हॉर्न अभी मैंने ऑफ किया, अभी मैंने बचा के आपको दिखाया था। तो ये यहाँ पे इस तरह का लुक देता है। सही हो गया। फिर ये एक RPM मीटर था, इसको मैंने भी वीडियो में दिखाया था अपनी, जो मैंने इंग्लिश में की है। ये 7 स्विचेस लगा दिए कि जो चीज़ें आपको ऑन करनी है वो लगा के, ऐसे कि उतारे भी जा सकते हैं, लगाए भी जा सकते हैं, ईजी है। और इसकी भी वायरिंग इस तरीके से की है कि उतारी लगाई जा सकती है। इसमें मैं मॉडिफिकेशन करता रहता हूँ। तो मुख्तलिफ जो अब ये HOTAS के बारे में जल्दी से बताऊँ आपको। इधर मैंने मुख्तलिफ स्विचेस दिए हैं। यहाँ से मैं फ्रंट फेंडर के ऊपर जो लाइट्स लगाई हुई हैं वो LEDs वो ऑन कर सकता हूँ। रियर कुछ LEDs और बेसिक लाइट्स लगाई वो ऑन कर सकता हूँ। ये तेज़ किस्म की LEDs लगाई थी पीछे, DRL लाइट्स और एक लेज़र के साथ वो, और इस तरफ भी यही मामला था कि लाइट्स का था। तो फिर इस तरीके से मैंने इसको किया। बाकी स्विचेस लगा दिए। जो अगर ऑन करना है, अगर आपको RPM ऑन करना है, आप ये बटन दबा दें। बाज़ लोग स्विच के साथ करते हैं तो बैटरी पे जोर आता है, तो मैंने इस तरीके से कर दिया कि जिसको जो ऑन करना है, जैसे जिस तरह का मूड है आप वो ऑन कर लें। एम्बियंस लाइट है, जैसे कि मैंने अभी इंग्लिश वाली वीडियो में बनाई है। एम्बियंस लाइट RPM की है, और ये फ्रंट दो मैंने LEDs वहाँ लगाई हैं, बहुत तेज़ किस्म की, जो ये अच्छी लाइट देती है। फिर सामने मैंने इंस्टॉल कर दिया जी ये एक केबिन टेम्परेचर बताएगा आपका,
ये आपका कंपास, बाकी एक स्विच रख दिया जिससे आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। ये है, सब एक साथ चलाएंगे तो बैटरी विल गेट ड्राइड आउट, आई शुड से आउट ऑफ चार्ज। फिर ये सामने में एक वो चीज़ जो लेवल बताती है इसका, जो होता है आपका प्लेन का जो लेवल बताता है ना, तो ये वाली मैंने स्पेशल मंगवाई थी। तो आप सब कह रहे होंगे कि गाड़ी को प्लेन बना लिया क्या? ये बस एक छोटा सा शौक है। हर आदमी कोशिश होती है कि गाड़ी को स्पोर्टी बनाए। लोग स्टीयरिंग चेंज करते हैं, मैंने वही रहने दिया। इसी के ऊपर मेरे दोस्त ने मुझे प्रेजेंट किया था, मैंने वो चिपका लिया TRD का। तो इसको ऐसा लुक दिया कि आपको स्पोर्टी भी नज़र आए, और आपका एक जो मेरा जो एयरक्राफ्ट का शौक है वो भी मैं साथ साथ इसका भी पूरा करता हूँ। सो दिस रियली ईजी, वेरी ईजी इंस्टॉलेशन, कोई डिफिकल्ट नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें सिंपल सी लगाई हुई हैं। आगे हेड्स अप डिस्प्ले की मैंने कॉपी की थी, जैसे प्लेन में लगा होता है अक्सर। ये ओरिजिनल नहीं है, ये मैंने गत्थे का काट के, प्लास्टिक का काट के इसको बनाया हुआ है, जस्ट टू गिव इट अ लुक कि आप जब यहाँ बैठें तो इट गिव्स यू अ फील कि ये लुक्स लाइक कि जैसे एक होता है ना कि SUV, तो ये इस तरीके से बनाया है। चलिए आपको बस सिंपल आपको मैंने कहा बता दूँ। हर कोई कर सकता है, आई एम नॉट लाइक स्पेशल वन, बट दिल की आज आपसे शेयर करूँ इस बारे में। तो सही हो गया, थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ रहे। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू अनदर वीडियो वाइब्स विद अहमद कुरैशी। अल्लाह हाफिज़।